on the increasing order of basic strength. Let me make these structures for you guys. ठीक है, aniline and p-nitroaniline तो आप लोग बना लीजिएगा. NH2 NH2 और यहाँ पे क्या होगा आपके पास NO2 ग्रुप. अच्छा, p टॉलुइडीन क्या होता है? टॉलुइडीन आपके पास एनिलीन और साथ में CH3 ग्रुप पैरा पोजीशन. ओके, सो इसको टॉलुइडीन बोलते हैं. दिस इज योर A, B and C. Good evening, sir. Good evening, Akshay. See, like this, if you're not able to give the basic strength, then remember the basic criteria for basic strength. What is the basic criteria? Basic strength increases on increase in electron density, right? That means basic strength is directly proportional to electron donating group, and it is inversely proportional to electron withdrawing group. Okay. Now in the A case, we don't have any group, so blank. NO2 is electron withdrawing group, and CH3 is electron donating group. Okay, in the para position. Now here we can directly write now that C is going to be the most basic. अब उसके बाद जहां पे कुछ नहीं हो रहा है, right? Here we have NH2 and here we don't have any group. That is why C, after C will have A and after A will have B.
B will be the least basic. C and then A and R, correct. Okay, so please write here. Electron donating group increases basic strength of aniline. Electron withdrawing group decreases basic strength of aniline. Please write this down. धीरे धीरे करके बच्चे आते हैं, इतना धीरे धीरे आते हैं. Please take a screenshot, guys. Those who have just joined, please take a screenshot. And we'll move to the next reaction. I think last time acylation tak hua tha, no? Yep. Right, the fourth one. Carbyl amine reaction. Carbyl amine reaction. This is very important reaction. Carbyl amine reaction. Those who are late, please take a screenshot. Dona, Atif, you guys just joined. Please take a screenshot and write carbyl amine reaction. Write carbyl amine reaction. In carbyl amine reaction, we have amine and we react this with CHCl3. What is CHCl3? It is chloroform. In the presence of a base, KOH or NaOH, and some heat, it gives RNC, isocyanide. Okay, this is known as isocyanide, alkyl isocyanide, or carbylamine. Plus KCl and H2O. Okay. Please write aliphatic and aromatic 1 degree amine. Reacts with chloroform. Reacts with chloroform and KOH at elevated temperature to form isocyanide. To form isocyanide. Right, next. Isocyanide has a very foul smell. Has a very foul smell. Therefore, it is used for detection of. Therefore, actually, this reaction is used for detection of 1 degree amine. Okay. So if you have 2 degree amine and if you have 1 degree amine, then you can use carbyl amine reaction, carbyl amine test. Write the fifth one.
reaction with nitrous acid. Okay, first of all, what is ONO and how it is prepared? Okay, nitrous acid, please write. ONO is prepared in situ. By the reaction of NaNO2 at plus HCl at low temperature. At low temperature. Now, different types of amines give different products when we react it with ONO. When we react it with nitrous acid, it gives different products. So important ones are primary amine and aromatic amine, and those are there in your NCERT also, but we'll write for secondary and tertiary also. Okay, so you have primary amine, that is aliphatic, simple aliphatic, or NH2 in the presence of NaNO2 plus HCl. This is going to give you, first of all, Diazonium salt. You will get R nitrogen with another nitrogen with triple bond. This nitrogen atom will have positive charge, and यहीं पे आपके पास क्या हो जाएगा? Cl negative. This is alkyl diazonium salt or alkyl diazonium chloride. Generally speaking, this is alkyl diazonium chloride. Okay, now this is very unstable. It even reacts with moisture. Okay, and it forms alcohol. It forms 1 degree alcohol. Okay, it forms what? Primary alcohol. And it gives out N2 gas, and it also gives HCl gas. ठीक है, अगर आप लोग देखिएगा preparation of alcohol, then we have done this reaction also ONO के साथ. B is aromatic amines. If you have a benzene ring and there is a NH2 attached. Okay, so this is aniline, specifically speaking, and generally speaking, this is what? Arylamine. And we react this with NaNO2 plus HCl at 0 to 5 degrees Celsius at low temperature. I will get benzene diazonium chloride. Nitrogen, triply bonded with nitrogen, positive charge here, Cl with a negative charge. And basic same thing, N2 plus HCl. Okay, now right next, if you have 2 degree amine, that means you will have R2NH plus ONO. So this, you will get this water molecule. This nitrogen and this nitrogen will attach together. You will get R2 and singly bonded with nitrogen. This nitrogen is doubly bonded with oxygen. Okay, plus H2O. Nitrosamine. If you have R3N, 3 degree amine plus ONO, then you will get, first of all, RNH ONO, RNH, R3, NH, and O2.
This is basically a very reactive salt. यहाँ पे this nitrogen has a positive charge and this NO2 has a negative charge overall. But they are going to neutralize each other, counter each other, and you will write RNHNO2. Then if you just warm it, and you will get R3. Sorry, यहाँ पे मिल जाएगा आपको R2 N singly bonded with N double bond O, same nitrosamine plus one molecule of alcohol, ROH. ठीक है? These reactions are not there in your NCERT, but फिर भी देख के चले जाइएगा. We are doing, like, generally I don't do this type of reaction, but if you see the case based questions जो आते हैं ना आपके पास, case based में एक सवाल ऐसा रहता है generally which is going to be a bit beyond your syllabus. वहाँ पे कुछ नया information आपको दिया हुआ रहता है. So these reactions are not there in NCERT, but उन्होंने ऐसे message, मतलब ऐसे mention किया हुआ है कि different types of amine give different products on reaction with nitrous acid. So these things may be there in your case based question. ठीक है, तो पहले से अगर आपने reaction देखा हो तो आपको आसानी हो जाएगी. Write this down and then you write reaction with aryl sulfonyl chloride. Okay, so this is also a test and it is an important reaction. Please write the sixth reaction. This is also known as Hinsberg's reagent or Hinsberg's test. What is aryl sulfonyl chloride? You have a benzene ring bonded to sulfur with double bond O and chlorine. This is Hinsberg's reagent. Right here, used for the distinction of 1 degree, 2 degree, and 3 degree amine. One degree, 2 degree, and 3 degree amines. Okay. If you have 1 degree amine plus the Hinsberg reagent, it will give product, and this will be soluble in alkali. If you have 2 degree amine plus the Hinsberg's reagent, this will also give you product, but this will be not soluble in alkali. 3 degree amine plus the Hinsberg reagent, this will not react, so you will get no product. Okay, so this will not give any reaction. First of all, ये देख लीजिए distinction कैसे होगा. So it is soluble in alkali and one is not soluble in alkali. What is the difference between 1 degree, 2 degree, and 3 degree? The main difference here is 1 degree has 2 hydrogen, 2 degree has 1 hydrogen, 3 degree has 0 hydrogen. That means for the reaction to happen, we should have at least 1 hydrogen attached to the nitrogen. So see, if you have 1 degree amine, you will have the reaction something like this. The benzene ring with sulfonyls, S double bond O, and chlorine like this. Then you will have nitrogen. This will have 2 hydrogens, 1 hydrogen here, 1 hydrogen here, and let us suppose you have R group. So this is what? This is 1 degree amine, right? Now here, basically this HCl is going to be, this HCl is going to be removed, and sulfur and nitrogen will form a bond. But the reaction कैसे होगा? Nitrogen का lone pair electron, it will attack on the sulfur atom, because sulfur atom is going to be delta positive because it has attached with oxygen atom, 2 oxygen atom more electronegative. So nitrogen atom will attack on the sulfur, ठीक है? And उसके बाद ये chlorine निकल जाएगा, यहाँ से hydrogen निकल जाएगा. So basically what you are going to get, it is a very similar reaction as we have done for acylation. In the last class we did for acylation, ना same type का है, वहाँ पे carbon पे attack कर रहा था nitrogen, यहाँ पे sulfur पे attack करेगा. So you have the benzene ring as it is, the sulfur with 2 oxygens as it is.
Now this nitrogen, it has lost one hydrogen, but this hydrogen is still present, and then you have the R. Now this hydrogen, if we remove this hydrogen, then we are going to get a negative charge on nitrogen atom, which is going to be delocalized because of this oxygen, because of this oxygen, and this oxygen will also have delocalization and resonance because of this benzene. So this hydrogen is very acidic. क्यों acidic है? Because अगर nitrogen ने छोड़ दिया इसको, the nitrogen said that hydrogen, please go away. So nitrogen will get negative charge and this is very stable. So nitrogen will say that even if you are not present hydrogen, I am very stable. That is why this hydrogen will be having acidic property. This will be acidic hydrogen. ये क्या है आपके पास? This is acidic hydrogen. ठीक है? Therefore, soluble in alkali. इस कंपाउंड को आप alkali में डालिए तो तुरंत सॉल्वेट हो जाएगा, right? It will be soluble in alkali. Now look at the next one. Same thing. But except that hydrogen, let us suppose you have some CH3 here. Okay, तो यहाँ पे ये दो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन हो जाएगा. Okay, ये नॉन नेगेटिव नहीं होगा अभी. And this nitrogen will have the CH3 group. Okay, now here we don't have any hydrogen, any acidic hydrogen. That is why it is not soluble in alkali. Right? No acidic hydrogen, therefore not soluble in alkali. लीजिएगा 3 degree amines. Does not react with Hinsberg reagent. As they do not have any hydrogen or nitrogen. After this, you will write electrophilic aromatic substitution of aniline. जी, लिख के बताइए अगर हो जाए तो. Tens. Wait, next. Okay, please first of all see. Aniline has NH2 group. Okay,
And this NH2 group is going to be very activating. Why? Because it will show resonance. NH2 group is electron donating group. It will donate the electron towards the carbon ring. It will go like this, because the first resonating structure, that is double bond NH2 with a positive charge and a negative charge here, double bond here and double bond here. Similarly, you will get other resonating structure where you will have a negative charge on. You'll have a negative charge on what? You will have a negative charge on para position and again an ortho position, and you will get a resonance hybrid structure. Delta negative here, here, and here, in both the ortho position and the para position. Okay. Now, please write NH2 group is highly activating and ortho para directing. NH2 group is highly activating and ortho para directing. Now, this NH2 group is so activating. If I do bromination, please see, if I do bromination, so I should get one ortho product and one para product. But due to its high activating nature, it reacts with Br2 aqueous and it gives a tri-substituted product which has bromine at both the ortho position and also at para position. So what do we get? We get a tri-substituted product. Okay, it is so activating that we get a tri-substituted product. In order to get a mono-substituted product, what do we do? Please write. First of all, यहाँ पे इससे हमको क्या पता चला? NH2 is highly activating and gives tri-substituted product. It gives tri-substituted product. Now, in order to control this, please write, to control this, acylation with acetic anhydride is done. Acylation, last class ka last reaction, acylation with acetic anhydride is done. Followed by desired electrophilic aromatic substitution. ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे? Acylation करेंगे. Acylation किसके साथ? Acetic anhydride. So we have the benzene ring. NH2, and we will add here acetic anhydride. Acetic anhydride has a structure O, C double bond O, C double bond O, and CH3 and CH3. Okay, so you will get the acyl group attached on the nitrogen atom, and one of the hydrogen will be removed from here. This is as it is. One second. Nitrogen, one hydrogen. This nitrogen atom will attack on what carbon? This carbon atom. ठीक है, और उसके बाद इस कार्बन पे अटैक करेगा, and this will leave as a leaving group. It will get the hydrogen. तो यहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, and here you get nitrogen attached with C double bond O and CH3. ठीक है, so this is the acylation of aniline. Acylation of aniline is done to control the activating power of nitrogen, control the activating power of NH2 group. Now this lone pair here, अगर आप इसको ध्यान से देखिए, so it has two options for resonance. It can either do the resonance with this carbon
an oxygen, the carbonyl group, or it can do the resonance with this benzene ring. Okay. So both of these resonance are available. So obviously, पहले जो nitrogen का NH2 था, it was doing the complete. It has only one choice: resonance with the benzene ring. Now this nitrogen's lone pair electron, it is diverted towards the carbonyl group also, and hence the activating power decreases. And if the activating power decreases, it will not activate the molecule as much. Also, these ortho positions are protected now because we have a bulky CH3 group. No electrophile can attack on the ortho position. Okay, so once we have done the acylation, we can do the bromination in the presence of aqueous bromine water, and we will get, we see this acyl group will be still present, NH, C double bond O, and CH3. You will get a bromine group here. Now, after this, you just do acidic or basic hydrolysis in the presence of H plus or OH negative aqueous. You will get back the NH2 group. Please write this down. Let me know if you're done. You guys have written these 2 points. Yes, sir. Okay. After acylation, the lone pair of nitrogen atom is also in resonance with carbonyl group, and hence decreases its activating power. Decreases its activating power, right, as due to steric hindrance after bromination. Ortho product is not formed. And we get only P bromo aniline. I hope you have written the reaction. You will also show the resonance, how it happens. Say pH attached with nitrogen. This will have 1 hydrogen. C double bond O, CH3. So this lone pair electron is in resonance with this
carbonyl group like this. PH, NH, double bond carbon, single bond oxygen, negative, nitrogen positive, single bond CH3. Okay, and since the lone pair electron is diverted towards carbonyl group, it is less available for the benzene and it decreases the activating power. After this, you will write nitration. Right, next. See, in nitration, the substrate is aniline still. Just concentrated HNO3. In the presence of concentrated H2SO4. And we get 3 products. Para substituted NO2. This is 51%. And we get a significant amount of meta substituted NO2. This is almost 47%. And we get a very little amount of ortho substituted product. This is 2%. Why is this happening? See, if we have concentrated HNO3 and concentrated H2SO4, then H plus ions will be revolving. They will be surrounding this aniline ion. And this nitrogen atom cannot resist and it will attack the H plus. Okay. It will attack the H plus and it will become what? NH3 positive. NH3 positive is electron withdrawing group. And due to that electron withdrawing group, we get some amount of, it's not some, but significant amount of the meta substituted product. We get a meta product. Okay. So please write. In presence of strong acid, in presence of concentrated acid, NH2 of aniline gets protonated to NH3 positive. Making it a electron withdrawing group, making it a electron withdrawing group and meta-directing. Therefore, we get significant amount of meta product on nitration.
Okay. Now, in order to control this, if we want just one product, if you want only the para product, then we will do silation. First of all, we'll react this with CS3, acetic anhydride, NH, C double bond O, CS3, and then we will react with concentrated HNO3 and concentrated H2SO4. This amide will be still present, and we will get a nitro group here. And further hydrolysis in the presence of H plus or OH negative will get back the NH2 group. And the NO2 group will be as it is. Okay, write this down, and then you will write sulfonation. Now, in sulfonation, we will use just concentrated H2SO4. Second scroll up. Achha, just a second. अक्षय हो जाए तो बताइएगा. Done, sir. Sulfonation में लिखिए concentrated H2SO4. First of all, you will get a salt. Nitrogen will get one of the NH3 positive. Okay, because it is concentrated acid, H plus will be there, and HSO4 negative. But after heating at high temperature, somewhere between 453 to 473, 453 to 473 Kelvin,
we get para substituted sulfonilic acid. You have NH2, and here we have SO3H. Now this hydrogen is still very acidic, and that is why we have equilibrium maintained, or there is a reversible reaction between NH3 positive and this gets SO3 negative. Now this type of molecule which has a positive and negative charge on the same molecule, these are known as Zwitter ion. Okay, write a note. Aniline does not show. Friedel-Crafts acylation or alkylation. Okay, it does not show Friedel-Crafts reaction. Due to the formation of salt, with AlCl3, ना AlCl3 को कैसे यूज करते हैं? As a lowest acid, ना, which is used as a catalyst. With AlCl3, the lowest acid used as a catalyst. Due to this, salt बनेगा तो नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा? Positive charge. Due to this, the nitrogen of aniline gets a positive charge and acts as strong deactivating group. Therefore, it does not show Friedel-Crafts reaction. It is Friedel-Crafts acylation, right? No. It is Akshay, can you please tell me what you are trying to say? Sir, nothing. Nothing. Friedel-Crafts दो रिएक्शन होते हैं ना, एक अल्काइलेशन होता है और एक एसाइलेशन होता है, दोनों ही नहीं शो करेगा. Okay. ठीक है? Okay. Alkylation में we use haloalkene and AlCl3. Acylation में we use acyl fluoride and AlCl3. ठीक है? So both of them is not shown. All of you done? Yes or no? Please tell me. Done, sir. Very next. Diazonium salts. Okay, so diazonium salt can be alkyl diazonium salt, or N2 positive, X negative, or these can be aryl diazonium salt, AR N2 positive and X negative. ठीक है?
तो यहाँ पे आपके पास X जो हो सकता है, it can be either Cl negative, mostly it is Cl negative, it can be also Br negative, it can be also HSO4 negative, it can be BF4 negative, etc. ठीक है, all of these are diazonium salt, but सबसे ज्यादा क्या मिलेगा आपको? N2 plus and Cl negative. And here the R group is what? You can have alkyl group also, and you can have aryl also. Aryl में आपके पास generally क्या होगा? Benzene. But the problem with alkyl diazonium salt अभी हम लोगों ने देखा, please see. देखिए, primary amine alkyl diazonium chloride, alkyl diazonium salt है ये. It is what? Very reactive and it forms alcohol. ठीक है? So it is very unstable and it reacts with moisture to form alcohol. Right, the first point. Alkyl diazonium salts are very unstable and they react with moisture to form alcohol. Right, next, aryl diazonium salt are stable at low temperatures due to resonance. We have nitrogen, triple bond nitrogen, double bond, single bond, double bond. Okay, and this has a positive charge. Now, these pi electrons, these move here, but as soon as they will move, the nitrogen will say that I cannot form 5 bonds. So it will break a pi bond with this nitrogen atom. And then you will get another resonating structure. Double bond nitrogen, double bond nitrogen. This nitrogen has 4 bonds, that is why positive charge. This nitrogen will get a negative charge. Okay. Now, this carbon atom will get a positive charge because it's lost its electron. These pi bonds will be as it is. Now we have simple resonance, A double bond B single bond C and positive charge. These double bond nitrogens will be as it is. Negative here, positive here, double bond here, and a positive charge here. Another resonating structure. These pi bond will shift here, the positive charge will shift in that carbon atom. These nitrogens will be as it is. Negative here and positive here. Get a positive charge here. These double bond is as it is. Then again, this pi bond will go to this carbon atom, and this nitrogen atom will form the pi bond as before. We'll get double, single double, single double. You will get single bond nitrogen, triple bond nitrogen. This will have positive charge only. Okay. So as you can see, there are 5 resonating structures of aryl diazonium salt, and specifically speaking, benzene diazonium salt. That is why it is stable. Right. Next, the method of preparation. There is only one method of preparation: diazotization of amine.
ठीक है, जो आपके साथ ओनो के साथ रिएक्शन था ना, इट इज द सेम थिंग. यू हैव NH2 plus NaNO2 plus HCl at 0 to 5 degrees Celsius. N2 plus Cl negative. Benzene. Diazonium chloride. BDC. नेक्स्ट फ्राइडे किसका टेस्ट है आप लोगों का? Yes guys. नेक्स्ट फ्राइडे व्हाट चैप्टर? किसी को याद है? नहीं याद है? No one remembers. नेक्स्ट Sir, क्या है? haloalkyls. हाँ ठीक है. अगर आप पीडीएफ देखिएगा ना तो उसमें अल्कोहल्स भी लिखा हुआ, प्लीज उसको इग्नोर कर दीजिएगा. असल में हमने ही जब भेजा था सिलेबस टीम को, तो हमने ही उसमें अल्कोहल्स हम इरेज करना हटा भूल गए थे. ठीक है, डिलीट करना नहीं. कुलसुम सिर्फ हैलो एल्केन है. ओके कुलसुम, हम यही बताना चाह रहे थे. देयर इज ओनली हैलो एल्केन. ठीक है, अल्कोहल का नेक्स्ट वीक में है. आप देखिएगा तो अल्कोहल फिनॉल्स ईथर्स नेक्स्ट वीक में. नेक्स्ट वीक मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक. अभी जो आपके पास फ्राइडे आ रहा है ना, व्हिच विल बी 30 दिसंबर, only haloalkane and haloarenes. ठीक है, only haloalkane and haloarene. Now write next reactions of BTC. Benzene diazonium chloride. ठीक है, at the first reaction, Sandmeyer reaction. Now, Sandmeyer reaction is when you have cuprous, chloride, bromide, or cyanide. We have the benzene diazonium chloride N2 plus, Cl negative. If you react this with Cu2, Cl2, cuprous chloride in the presence of HCl, you will get chlorobenzene. React to Cu2Br2, cuprous bromide in the presence of HBr, you will get cuprous bromide. If you react this with cuprous cyanide in the presence of KCN, you will get benzene nitrate. Okay, so all of these are Sandmeyer reaction. लेकिन अगर आपसे Sandmeyer reaction पूछा जाएगा, आप लोग प्लीज इसको लिख के आइएगा. ठीक है, क्लोरीन मॉलिक्यूल. Now we get similar type of product with another reaction, that is Gattermann reaction. Okay, please remember, this is only Gattermann reaction. It is not Gattermann-Koch reaction. ठीक है, Gattermann-Koch reaction आपके पास aldehydes में था. Now in Gattermann reaction, there is a slight change in reagent in order to get
chlorobenzene, they use copper in the presence of HCl, not cuprous chloride. And here they use copper in the presence of HBr. Okay? So this is the only difference. And it has been seen that Sandmeyer reaction, it gives better yield. But Gatterman reaction also gives you same products but less yield. So as you can see, what is the main characteristic of Diazonium group? The Diazonium group can be easily replaced. ठीक है ना? Generally आप देखिएगा जो नहीं समझिएगा आप लोग. If there is any group that is attached on benzene ring, उसको निकालना उतना आसान नहीं होता. It is not very easy to remove it. But benzene diazonium chloride, it is very easy to remove the diazonium group. ठीक है? So that is why these reactions are very important for conversions also. After Gatterman reaction, you write other substitution of diazonium group. Okay, so see, if you react this with Ki, then diazonium group is replaced by iodide group. If you react this with HbF4, okay, then you will get diazonium and then this will be bromofluoride. Okay, borofluoride. And here you will heat it to get replaced by fluorine. So we get iodobenzene, we get fluorobenzene. If you react this with ethanol or H2 in the presence of H3PO2, you will get simple benzene. यहाँ पे आपके पास this carbon does not have any hydrogen right now, and it is replaced by hydrogen if we react with this H2O in the presence of H3PO2 or ethanol. ठीक है? Any one of the reagents you can use. You can use this reagent H2O plus H3PO2, or you can just use ethanol. If you react this with H2O, so if you remember alkyl diazonium salt, they react with water to give alcohol, and these will react with water to give phenol. Then you have HbF4 and then NaNO2. In this case, you are going to get replaced by NO2 group. The diazonium group replaced by NO2 group. Please write this down. Write this down. Let me know once you're done. There's one more type of reaction, that is coupling reaction. Is there anyone who is still writing the substitutions? Yes, sir. सबकी छुट्टी हो गई स्कूल? कोई है जो स्कूल जा रहा है? Is there anyone who is going to school? No, sir. No. Wednesday 9:30 के से आ सकते हैं आप लोग? AM 9:30 AM.
जी कोई ऐसा है जो नहीं आ सकता है? टेल मी। Okay, fine. Then you all will come on 9:30 a.m. KSA. This will be 12 noon IST. Okay, Wednesday. In this class, we will do biomolecules. ठीक है, अब लिखिए कपलिंग रिएक्शन। अब लिखिए ना आप लोगों ने, yes or no? Yes, sir. Right here, coupling reaction. So coupling reaction is shown by phenol and aniline. ठीक है, एक coupling reaction आपके पास benzene diazonium chloride. We have this nitrogen will be what? Nitrogen, triple bond nitrogen. ऐसे बनाइए आप. Positive here, chlorine's negative here, plus nitrogen and OH. Phenol is acidic in nature, तो इसको हम लोग H+K, we keep this in acidic conditions. Okay, and this HCl is being removed and you get nitrogen, और ये pi bond इधर निकल जाता, so you will have double bond nitrogen, and this nitrogen gets attached with the carbon atom of hydrogen, and then you have the OH group. Due to this extensive conjugation, this is used in dyes, and this is an orange dye. Similar reaction is done with aniline also. For aniline, we keep basic condition. Same HCl will be removed, and you will get NH2, and this is a yellow dye. Please write this down. All of you done? Done, sir. अब देखिए, since organic chemistry is completed, ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता, बट उस बायोमोलिक्यूल्स का रिलेशन उतना ज्यादा इन स्टार्टिंग के 4 चैप्टर के साथ नहीं है. ओके, सो दीज 4 चैप्टर्स आर वेरी मच रिलेटेड, कन्वर्जन्स वगैरह, इवन फॉर दैट मैटर एसिडिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर, बॉइलिंग पॉइंट एंड रिएक्शंस आल्सो आर क्वाइट ओवरलैपिंग इन ऑल ऑफ दीज चैप्टर्स. ठीक है, सो इन सारे चैप्टर्स के लिए आप कैसे प्रिपरेशन करेंगे? यू विल फर्स्ट ऑफ ऑल, यू शुड हैव एटलीस्ट 5 sheets of methods of preparation. You should have method of preparation of haloalkane halorine, method of preparation of alcohol phenol ether,
Third, you will have one for method of preparation of aldehyde and ketones, because you will have a lot of methods of preparation and aldehyde and ketones. ठीक है. Fourth, method of preparation of carboxylic acid, and you will have method of preparation of amines. So these will be 5 pages, not also sheets, only pages. है ना, sheet में 2 पेज होता है. One sheet has 2 pages. Then you will have 5 pages for chemical reactions. इन सब का ही क्या होगा? Chemical reaction. ठीक है. And also please remember, for example, method of preparation of haloalkane halorine, इसमें आपको पता है if you are going to use alkene plus HBr, तो 2 रूल है, anti-Markovnikov and Markovnikov. It is going to be anti-Markovnikov if there is peroxide present or heat present or there is light present. ठीक है. तो उन सारी चीजों को आप ब्रैकेट्स में लिखते रहेंगे. Okay. And you have basically 3 rules: the Markovnikov rule, the anti-Markovnikov rule, and the Setzev rule. So both of these for addition and this is for elimination. ठीक है. एंड उसके बाद मान लीजिए SN1 SN2 हो रहा है. ठीक है. तो SN1 और SN2 में क्या होता है? SN1 में रेसमिक मिक्सचर होता है. ओके. सो SN1 और SN2 का ऑर्डर वगैरह, ये सारी चीजें आप यहाँ पे ब्रैकेट्स में कुछ कुछ अपना इंडिकेट कीजिएगा, बट प्लीज मेक श्योर दैट वो एक पेज में हो जाए. द नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज गेट 1 शीट ऑफ पेपर A4 साइज, और A4 साइज को बीच में ऐसे एक लाइन दे दीजिएगा. ड्रॉ लाइन इन बिटवीन. Okay, and then you will write the first chapter, haloalkane halorine, और उसके नेम रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन. सिर्फ नाम लिखिएगा, पूरा रिएक्शन मत लिखिएगा, बिकॉज स्वार्ट्स रिएक्शन मेथड ऑफ प्रिपरेशन में होगा, फिर किल्स्टीन रिएक्शन मेथड ऑफ प्रिपरेशन में होगा, सैंडमेयर रिएक्शन मेथड ऑफ प्रिपरेशन में होगा, फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन जो आपके हैलोरीन में हो रहा है, दैट इज गोइंग टू बी इन केमिकल रिएक्शंस. ठीक है. तो यहाँ पे आप रेफरेंस दे दीजिएगा M या फिर C. ठीक है. सो इस तरह से. And then again you will just write the names of all of these name reaction, जो भी आपके पास haloalkane में आ रहा है, secondly alcohol में आ रहा है, aldehyde ketone carboxylic acid में आ रहा है, तो you will just write the names of all those reaction, जो भी name reaction. Okay, then you will make another sheet. ये आपको किसके लिए है? name reaction के लिए. Then you will make another sheet. यहाँ पे सेम चीजें आपको करनी है, बट यू विल डू द सेम थिंग्स फॉर वाई टाइप ऑफ क्वेश्चंस. गिव रीजंस. ठीक है. गिव रीजन क्या मतलब? गिव रीजन कि पैराडाइक्लोरोबेंजीन हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट, हायर मेल्टिंग पॉइंट देन ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर्स. ठीक है. गिव रीजन KCN आपको क्या देता है? नाइट्राइल देता है, साइनाइड देता है, बट AgCN आपको आइसो देता है, राइट? आइसोसाइनाइड आइसोनाइट्राइल देता है. सो व्हाई, व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? ओके. Then you will say halogen is an electron withdrawing group, but it still gives ortho and para product. Why? इन सब के आप सिर्फ सवाल लिखिएगा. ओके. प्लीज राइट ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस, बिकॉज इनके आंसर्स आपके नोटबुक में, इनके आंसर्स आपको याद होने चाहिए. आप एग्जाम से एक दिन पहले जब रिवाइज कर रहे हैं तो आप पूरा चैप्टर नहीं करिएगा ना. आप क्या कीजिएगा? एक गिव रीजंस का एक वाला पेपर लीजिएगा, सवाल पढ़िएगा और खुद को जवाब दीजिएगा. सवाल पढ़िएगा और खुद को जवाब दीजिएगा. ये रीजन जो है ना, एक एक लाइन का होता है. बेसिक उसमें क्रक्स वर्ड्स जो है ना, वो आप ध्यान में रखें. फॉर एग्जांपल KCN और AgCN में व्हाट इज द क्रक्स वर्ड? KCN इज आयनिक, AgCN इज कोवेलेंट. ये अगर आपको याद रहा, देन यू कैन रिवॉल्व द आंसर सराउंडिंग इट. डाइक्लोरोबेंजीन वाला जो है आपके पास है, पैरा का क्यों ज्यादा होता है मेल्टिंग पॉइंट? बिकॉज इट इज सिमेट्रिकल इन नेचर और पैकिंग अच्छी होती है. सो ये रीजंस आपके 2 वर्ड्स के हैं, ये आपको जहन में होना चाहिए. ठीक है. सिमिलरली अभी हम लोगों ने देखा था कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन फेनॉल, इवन दो फेनॉल हैज मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. व्हाई? उसमें आपके पास एक सबसे बड़ा इक्विवेलेंट रेजोनेंस एंड नेगेटिव चार्ज और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम. इतना ही लिखना. ठीक है. इतना ही आपके दिमाग में इतना रहना चाहिए. डिटेलिंग जो है आंसर की, वो आपके पास आप कहीं ना कहीं तो लिख के रखिए उसको, हम ये नहीं बोल रहे मत लिख के रखिए, लेकिन ये रिवाइज करने के लिए. ओके. सो यू विल राइट ऑल द गिव रीजंस फॉर ईच चैप्टर. हैलोअल्केन में कौन कौन से हैं, halorine में कौन कौन से हैं, then in alcohol phenol ether aldehyde ketone carboxylic acid. ठीक है. then in amines will give all the reasons like this. ठीक है. then you will make one more page.
ऑल्सो प्लीज एक चीज याद रखिएगा, ये पेज बनाने का जो प्रोसेस है ना, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन द प्रोडक्ट। जब आप पेज को ये जो शीट्स आप जब बना रहे होंगे तभी आपकी वो पढ़ाई हो रही है, ठीक है। सो शीट बनने के बाद उतना ज्यादा काम नहीं आएगा जितना आपको शीट बनाना काम आएगा, तो प्लीज छापिएगा मत कहीं पे। ये सारी चीजें आपको इंटरनेट में अवेलेबल होंगी, लेकिन ट्राई कीजिएगा कि आप नोट्स वगैरह बनाएं, है ना। नोट्स वगैरह से आप देख देख के करें, या फिर आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में देखिए, उसमें देखिए वाई टाइप ऑफ क्वेश्चन कहाँ कहाँ पे। फिर एक आप बनाइएगा टेस्ट। हैलोल्केन हैलोरीन कौन कौन इसमें, अगर कोई टेस्ट है तो, अगर कोई टेस्ट है, मान लीजिए यहाँ पे एक टेस्ट आता है आपका लुकास रिएजेंट का, यहाँ पे भी आता है, अल्कोहल फिनॉल्स में भी आता है, दोनों में ही लिख लीजिए आप, ठीक है। सिर्फ नाम ही लिखना है ना लुकास टेस्ट, और जैसे लुकास टेस्ट लिखा आपने, ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आएगा, वहां पे आपने बस यहाँ पे रेफरेंस दे दिया, साइटेशन दे दिया दैट इट इज इन द मेथड ऑफ प्रिपरेशन, और ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपके रिएक्शन यहाँ पे नहीं, ठीक है। सो यू विल राइट ऑल द टेस्ट, यहाँ पे कौन कौन से टेस्ट हो सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी आप लोगों ने इस पर बड़ा कार्बेलामीन टेस्ट है, ठीक है, कार्बेलामीन टेस्ट है। अच्छा यहाँ पे, हाँ ये आपने लिखा, और ये लिखिएगा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ठीक है। फिर उसके बाद कार्बेलामीन टेस्ट में क्या होता है, ओनली 1 डिग्री, ठीक है। हिंसबर्ग रिएजेंट में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ठीक है। उसमें आप कुछ डिनोशन दे दीजिए, जैसे 1 2 3। हिंसबर्ग के लिए इस तरह किया करेंगे, 1 डिग्री में 1 डिग्री देगा, 2 डिग्री देगा, 3 डिग्री नहीं देगा। 1 डिग्री विल बी सॉल्युबल, या फिर आप यहाँ पे बस एस लिख दीजिए, नॉट सॉल्युबल। और जब 3 डिग्री कोई प्रोडक्ट ही नहीं देगा तो फिर क्या लिखें इसके बारे में, ठीक है। सो यू ट्राई टू समराइज थिंग्स इन योर ओन, और ये जो समराइज जब आप कर रहे होंगे ना, तभी आपका दिमाग काम करेगा, एंड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट आपको रटने की जरूरत नहीं है सारी चीजें, ठीक है। व्हेन यू आर गोइंग टू वर्क विद द मटेरियल, जब आप काम करेंगे उस मटेरियल के साथ ना, ऑर्गेनाइज करेंगे, देन ओनली योर ब्रेन विल कीप इट फॉर एवर। अब आप ध्यान रखिएगा, आपकी ये 10 पेज आपके दिमाग में है बस, ठीक है। वो 10 पेज अगर आपके पास दिमाग में है, उनका फोटो अगर आप लोग सोच रहे हैं कोई किसी रिएक्शन को, तो ये पेजेस याद आने चाहिए आप। अब इनमें आप जितना कलरफुल बनाना चाहें उतना कलरफुल बनाइए, ठीक है। यूज गुड पेन्स, हाईलाइट कीजिए, ठीक है। मेक इट मेमोरेबल फॉर यू, और जितना टाइम आप लगाएंगे उसमें, ना आप उसमें अपना नोट्स को इधर उधर पलटेंगे। शायद आप नोट्स को इतना ज्यादा देख लें, इतना ज्यादा आप अपने नोट्स को देख लें कि आपको नोट्स के ही पेजेस याद हो जाए, कि अच्छा ये वाला रिएक्शन राइट पेज के बॉटम साइड में था, ये वाला लेफ्ट पेज के टॉप साइड में था, ठीक है। इफ यू रिमेंबर दीज वेयर अ पर्टिकुलर रिएक्शन है, तो आपको रिएक्शन भी याद रहेगा। Now there is one more piece that you have to make. And in this you will write all the reaction of compare. सिर्फ सवाल लिखिएगा, ठीक है। कंपेयर हाइड्रोअल्केन हाइलोरीन में आप क्या कर सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट अगर हुआ तो, ठीक है, कंपेयर कीजिए इसका, ठीक है। रिएक्टिविटी का कंपेयर करने आ जाता है, SN1 के लिए रिएक्टिविटी, SN2 के लिए रिएक्टिविटी, ठीक है। तो आप लोग किस तरह से सवाल लिखिएगा, जैसे है आपके पास ABCD, यहाँ ब्रैकेट लिख दीजिए SN1, यानी कि वी हैव टू कंपेयर द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1। ABCD अब यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दीजिए बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिसिटी, ब्रैकेट में लिख दीजिए आप एसिडिटी, एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। So this is how you are going to write one page of one sheet, and हाइड्रोअल्केन हाइलोरीन में जितने भी आपके पास कंपेयर वाले सवाल हैं, अल्कोहल फिनॉल्स में जितने भी कंपेयर वाले सवाल हैं, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में, एंड फिर अमीन्स में, ठीक है। तो ट्राई टू मेक दिस इन one page. So total here you are going to have how many pages, 14 pages which will have the complete organic chemistry, ठीक है। बट अगेन छापिएगा मत कहीं से, ठीक है। बट प्लीज ट्राई कीजिए कि आप लोग इसको ना, मतलब कम से कम जो मॉक टेस्ट होने वाला ना, इसको एक एक चैप्टर का आप स्टार्ट कर दीजिए एक दिन में बनाना, ठीक है। मान लीजिए आपने हाइलोल्किन का स्टार्ट कर दिया, हाइलोल्किन, और अभी जैसे हाइलोल्किन का टेस्ट आने वाला है, हाइलोल्किन एंड हाइलोरीन का दोनों का बना लीजिए, ठीक है। हाइलोल्किन का एंड हाइलोरीन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों बना लीजिए। नेम रिएक्शन में सारे नेम रिएक्शन लिख दीजिए, गिव रीजंस में गिव रीजंस वाले सवाल लिख दीजिए, बस सवाल ही तो लिखना है आपको, ठीक है। आप सवाल इकट्ठे करते जाइए और आपका तैयारी होता जाएगा, कर लेंगे सब ये सब। तो प्लीज टेल मी गाइस, टेल मी। So what we should write in compare? कंपेयर में ये तो बताया ना, जैसे हाइलोल्किन हाइलोरीन है, इनमें से SN2 कौन फास्टर देगा, समझ गए। Okay, sir.
सवाल आपको एनसीईआरटी में जो सवाल है ना सिर्फ वही, ठीक है। Okay, sir. व्हाट यू हैव टू डू इन टेस्ट में आपको टेस्ट देना है अक्षय। टेस्ट के लिए हम ये कह रहे थे ना, ओनली हैलो एल्केन एंड हैलो अरीन्स आर कमिंग, Okay, sir. ठीक है। अगर आपने वो टाइम टेबल देखा होगा ना, तो उसमें शायद क्या उसमें अल्कोहल्स भी लिखा हुआ है, अल्कोहल नहीं आ रहा है। हम ग्रुप में मैसेज भी डाल देंगे, ठीक है। इसमें सिर्फ हैलो एल्केन हैलो अरीन आ रहा है, ठीक है। प्लीज मेक दीज 14 पेजेस। आप लोग जब बना रहे होंगे तब आप लोग को बहुत मदद मिलेगा। जब आप लास्ट टाइम में रिवाइज कर रहे होंगे तब आप लोग को बहुत हेल्प होगी, ठीक है। आपके पास सारी चीज ऑर्गेनाइज होगी, आपको सारा नोट्स नहीं देखना पड़ेगा। सब चीज तो आ गया ना, क्या बचा है यहाँ पे अब? देयर इज नथिंग रिमेनिंग। आपके पास लिस्ट आ गए सारे रिएक्शंस के, और जो सवाल, क्या ही सवाल आता है, नेम रिएक्शन आ सकता है सवाल, गिव रीजन सवाल आ सकता है, कंपेयर करने के लिए सवाल आ सकता है ना, और आपके पास टेस्ट आ सकता है। उसके अलावा कुछ बचा ही नहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। Sir, conversions. कन्वर्जन ये है ना, ये किस लिए है? Yes, sir. कन्वर्जन्स के लिए आप देखिए, कन्वर्जन्स के लिए एक सेकेंड, हमने तो कराया है ना आपको एक बार कन्वर्जन, हैलोजन हैलोजन में कराया है कि नहीं कराया है? Yes, sir, we are done. कराया है ना। प्लीज अगर आप लोग को कन्वर्जन में दिक्कत हो ना, तो प्लीज एक बार उस लेक्चर को देख लीजिएगा, रिकॉर्डिंग को, क्योंकि वहां पे हमने ये